The tribals of the Dhanbad region have over the decades been alienated from their water, their forests and their land. Once proud hunters and the soil have been reduced to illegal miners and pilferers of coal. यहाँ आदिवासियों का लंबा संघर्ष चला है। आदिवासियों का लंबा संघर्ष चला है, लंबी लड़ाई चली है। यहाँ शुरू से जो भी सरकारी नीतियाँ आईं वो आदिवासियों के विकास को मारकर, आदिवासियों की परंपरा को मारकर, उनके सांस्कृतिक विरासत को मारकर दूसरे समाज के लोगों की भलाई से जुड़ी रही। यहाँ की तमाम योजनाएं, उन योजनाओं के खिलाफ यहाँ आदिवासियों का संघर्ष चला। सरकारी योजनाओं में जो चीज़ें शामिल थीं वो आदिवासियों के विनाश का कारण थी, जैसे जंगल को काटना, पहाड़ों को काटना। आदिवासी समाज खुद में इतना उन्नत और इतना समृद्ध है कि दूसरे समाज को उससे सीख लेनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि झारखंड के कई इलाकों में हाथियों के घुस जाने की समस्या आम हो गई है। एक समय था जब आदिवासी के पाहन होते थे, पाहन यानी मुखिया, आदिवासियों के पाहन होते थे। अगर कोई आदिवासी लड़का अगर किसी जंगल में घुस के बड़ा सा कटहल तोड़ के लाता था तो पाहन उसको भरी अदालत में, गांव की अदालत में उसको सज़ा सुनाता था, क्योंकि भाई तुम जंगल से कटहल तोड़ के ले आए हो, जंगल का हाथी क्या खाएगा, वो तो गांव घुसेगा। तो आदिवासियों में केवल स्त्री और पुरुष के सामंजस्य से सृष्टि की मान्यता नहीं है, वहाँ स्त्री, पुरुष और प्रकृति के तादात्म्य से सृष्टि की मान्यता है। वहाँ जितना मूल्य, जितना वहाँ स्त्री को माना जाता है, पुरुष को माना से कम प्रकृति को नहीं माना जाता है। और प्रकृति में ही जंगल है, पानी है, जमीन है, ये तमाम चीज़ें हैं। आदिवासी ही पानी का रुख मोड़ने की खिलाफत करते हैं, आदिवासी ही कोयलकारों को बांधने की खिलाफत करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ आदिवासियों का संघर्ष कमज़ोर हुआ वहाँ आदिवासी विनाश के कगार पर गए। और झरिया एक ऐसा पहला इलाका है जहाँ आदिवासी सबसे पहले उजड़े। और यहाँ जो लोग आए वो आर्थिक ये उपनिवेश की सोच वाले लोग थे। यहाँ कई लोग ऐसे भी आए जो काम करने आए, लेकिन कई लोग लूटने की नीयत से आए। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लोग लूटने की नीयत से आए, कई लोग खटने की नीयत से आए। लेकिन यहाँ लूटने वालों की चल निकली और खटने वाले जो थे वो हाशिए पर रख दिए गए। और सबसे बड़ी वजह आदिवासियों के विनाश की यही रही है यहाँ पर। One of the very major thing in the Dhanbad coalfield has been a very important aspect which we are, I don't know, it's not getting proper attention. The area was tribal dominated area. The business opportunities, they have been grabbed by the people who originally do not belong to that place. There has been lack of education among the tribals and they have been exploited. यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं ये जल, जंगल और ज़मीन, ये तीन चीज़ से जुड़े हुए थे। तो इनके पास सबसे पहले तो ज़मीन छिन गई। कुछ तो लोग जो लैंडलॉर्ड्स बने उनके हाथ चले गए, कुछ जो बचे तो कोल इंडिया में गए, एक्वायर हुआ। और जंगल जो वो सरकार के पास चली गई। तो इन और जल का प्रबंध है नहीं। तो तीन तरफ से अगर एक समाज अफेक्टेड होता है जिसका कोई दूसरा जरिया नहीं था कमाने का, वो इन्हीं तीन पे आश्रित थे। तो अगर तीन के तीनों चीज़ उनके हाथ से निकल जाए तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी? जो हो सकती है वही हो रही है। इसलिए उनका जो है स्थिति इतना दयनीय है। Realize what land ownership is about, and they lost the land. You hear some dreadful stories that people sold off the land for a bottle of whiskey or something like that, because they didn't realize what they're doing. Actually, people from outside have come here.
and they are exploiting the local people over here. Kripashankar Chatterjee's famous statement, A plus B plus C equals D, Ara plus Balia plus Chhapra equals Dhanbad. That was made some years ago in the Bihar Assembly. But there's an impression that the original inhabitants of this place have become marginalized. They are being exploited by outsiders who come in. To some extent, it's true because most of the workers in mines are from outside. But then the locals too are responsible for it, because it has been generally found that the tribal people are not too much interested in hard work like mining. As I look back at my official career, I feel that my posting as Deputy Commissioner Dhanbad was perhaps the most eventful, because in a period of about 11 months, whatever I could do, I have not been able to do as much in any other posting that I have had. When I landed at Dhanbad, I had no what kind of problems I was going to deal with. As I started working, a number of issues came up and I had to react to them, in the way that I thought I could do best. And in this connection, what struck me most and which also occupied the most attention of mine, as Deputy Commissioner, was the problem of money lending among the colliery workers. We had heard of rural indebtedness among the poor in India, but I had no idea that money lending of a most vicious type operates, in industrial area. For many decades now, the government CCL authorities have been unsuccessfully trying to reach 400,000 people who live in Jharia. These people are not merely residing on top of India's best coal reserves. Their very existence is in danger because of underground fires. But many people in Jharia refuse to believe that they would be properly rehabilitated after they have been relocated. Over 7,000 children living in Jharia have written to the President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, seeking his intervention to stop the inferno raging beneath their homes. Large sums of money have been promised, but what is called the largest peacetime evac program is yet to start. Jharia township will go because the fire is approaching the Jharia township today or tomorrow. Usually expect to remove 600,000 people from Jharia. The number is about 400,000. 400,000. I'm absolutely confident it's going to take place. 400,000 people are going to be removed. Certainly. They're going to be rehabilitated. They're Yes. going to be relocated. Yes. It Certainly. is possibly going to be the world's largest peacetime evacuation program. And most people here, I've not met a single person here who believes that it can be done. I would say that they are right in their own manner because they have not seen any action on the ground to enforce a belief that is going to happen. But deep in my heart, I feel that this is certainly going to take place. We will have the political will. I mean, the political will is going to come in by some day or the other. It's a question of time only. Once the plan is prepared and it is approved by the government at its appropriate forum, the action will start. And you will see action, let me tell you, 1.5 years from now, you will see the action to start. And So you're going to see the action only at the end of 2007? 2007, yes. That much of time it will take. Because it is being given the final touches, and after all, the Supreme Court is after it. So they will see to it that the action takes place. The President of India is interested in this. The Prime Minister's office is interested in this. And how long will it take from the end of 2007? We have shortened the whole time schedule. Originally, the plan was 20 years. We have shortened it to 10 years. So once it starts, it will be a 10-year program. So 2007 to 2017, Jharia township and 400,000 people will not exist. Oh, of course they will exist. No. They will exist in a much better They are shape. at present. Yeah, they will exist in a much better shape. They will exist in a much cleaner environment. And at least I wish that
the present generation has already spoiled their health. At least the next generation will come up in a much better environment. जी नई दुनिया जो है समझो 1932 से पहले का हमारे ये बसाया गया। हमारे ग्रैंडफादर जो है हमारे बाबा ने इसे परचेज करके इसे बसाया है। इस इलाके में अभी 200 परिवार जो है हमारे किराएदार हैं और झरिया के नीचे में कोई आग नहीं है। Get the good package, the people may be saved, but question is that the people will be shipped in this rehabilitation process. Next question is that the mining process. If Jharia township will be safe with alternative mining technology, as our expert says, the underground mining is the best method. That is not necessary to shift Jharia township and the people as well. But we have a confusions over there about the BCCR and the government is declaring about the rehabilitation package. एक बार जो चीज़ डिस्प्लेस्ड होता है वो फिर प्लेस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये ह्यूमन मटेरियल है। ये किसी चीज़ का किसी कुर्सी को खसका के आप दूसरी जगह नहीं रख रहे हैं। ह्यूमन मटेरियल को आप कभी भी उस तरह से डिस्प्लेस करके प्लेसमेंट नहीं कर सकते, वो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए लोग जो है अपनी जगह से मरते दम तक जाना नहीं चाहता है। मेरा एक घर है, मान लीजिए जहाँ जिसका जन्म हुआ है, जिस गली में वो घुमा है, जिस आम का पेड़ में वो खेला है, वो इमोशनल टच जो है उसको वो लगता है कि लास्टली हम जल जाएं वो मंजूर है, यहाँ से न जाएं। ठीक है, लास्टली मजबूरी में लोग इसलिए वो नहीं जाना चाहते हैं, लास्टली मजबूरी में वो जा सकते हैं, क्योंकि जब देखेंगे हाँ सही में यहाँ पे ऐसा हो सकता है, अब लास्टली जब वार्निंग हो जाएगा कि अब ये ब्लास्ट करने वाला है या सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ कुछ तो धसान शुरू भी हो गया है। आप शायद सर होंगे, बहुत घर नीचे गया है, फट जाते हैं, हो रहा है क्योंकि अंदर आग लगा हुआ है। हम लोग यहाँ रहती हैं 1932 वाला खतियान वाला हम लोग को ज़मीन हटाने के बाद चल रहा है। तो हम लोग को जैसे कि मांग जो हम लोग को नौकरी के लिए ये है, तो नौकरी बिना हम लोग नहीं उठेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को ये नहीं को मुआवजा नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, तो हम लोग कैसे उठेंगे? उससे अच्छा यहीं पर मरने के जो आग लगा है ये सब BCCL जानबूझ के पेनकास्ट करके ये लाइन ठोकर ख़त्म करा दिया। 100% रोड पर रहेगा ऐसा बात नहीं है, आपके बुलावे पर आ जाएगा, मगर आपका सब काम आगे चल के करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है कि शिबू सरन को झरिया के बारे में कुछ ज्ञान है ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। शिबू सरन जो है वो ऑलरेडी वो यहाँ का व्यक्ति है। 10 बार जन्म लेगा और 10 बार कोयला मंत्री बनेगा, मगर उसको झरिया को जड़ने उसके बस की बात नहीं है। ये तो एकदम पक्का, ये क्या देखिए, विस्थापन नीति तो शुरू से नहीं रहा। कोल इंडिया का नीति या किसी भी चीज़ का विस्थापन नीति सही नहीं रहा, लेकिन अब आदमी, उस समय ज़रूरत भी नहीं था, लोग अपना जगह भी नहीं लेने को तैयार थे और चले जाते थे अपना जगह पर, चलो यहाँ से वहाँ चला गया, फिर वहाँ से वहाँ चला गया। लेकिन अब ऐसा हो गया कि चारों तरफ से लोग घिर गए। अब विस्थापन नीति बहुत मजबूत तैयार करने की ज़रूरत है। सिर्फ विस्थापन करने से उपाय नहीं है लोगों को। अब विस्थापन एक विस्थापन से नहीं होगा, उसको आर्थिक विस्थापन और सामाजिक विस्थापन भी होना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। जरूरी भी है वहाँ से हटाए जाएंगे जितने भी लोग हैं, और उनके लिए भी जो कोयला का उत्पादन होगा उसे जोड़ा जाएगा, और बाकी और भी इनकम का रास्ता निकाला जाएगा ताकि वो खतरा से लोग बचे पहले। Why is this part of India so wealthy in terms of mineral resources, economically backward? का एक तो पहला बात, आदिवासी लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा की कमी उनके अंदर है। दूसरी बात है, वहाँ जो कोयला का बहुत पहले से उत्पादन शुरू हुआ और कोयला मजदूर रह गए, और मजदूरी के बाद फिर उन्होंने दूसरा कोई सोचा नहीं, मजदूर का बेटा मजदूर, मजदूर का बेटा मजदूर रहा, और उसका भी नतीजा है उन पर असर हो गया।
और चूँकि वो अनपढ़ हैं, उनका कोई बैकग्राउंड में बोलने वाला कुछ है नहीं उनके पीछे, और उसके बाद राजनीतिक कमियों और सूझबूझ की वजह से ये काम हुआ है अधिकतर। The source of sustenance of all these people, not the mining people, but the people who lived in the area, was land. That land has been lost to mining, collapse, open cast mining. So they have nothing to fall back on for sustenance. So the only way out, they have joined the chain of mafia gang who pilfered the coal, put them in trucks. It's not only in Jharia, it's the same story in the open cast areas of Raniganj. It's the same in everywhere in all the coalfields of India. They are totally the people who are lost, and they've been forced to. They are a sort of ecological refugees, you know. They are nothing. Yes, in Narmada it's the same story. I'm not. Forget about mining. Everywhere is the same thing. It's not really a problem of the people who live upward, the marginal people. This is the problem all over the country. The developmental paradigm that India has chosen after independence, that developmental paradigm are creating refugees, environmental refugees, development refugees in various fields. That is the same thing what is happening in Jharia coalfield or any other developmental area. Marginalized people, they get more marginalized. ज़मीन के नीचे कोयला है, ये किसी के लिए हीरा है, किसी के लिए सोना है और किसी के लिए रोटी है। जिनके लिए रोटी है वो मौत की मांद में रोटी निकालने के लिए घुसते हैं, वो कोयला निकालने के लिए नहीं घुसते हैं। वो जान को हाथ में लेके, हथेली में लेके मौत का जोखिम उठाकर वो कोयला निकालते हैं और ज़्यादातर मुनाफा माफिया उठा ले जाते हैं। गरीबी का मूल कारण ये है। Riches, like for example in Mumbai, I mean the wealth and the riches, I mean they draw a disproportionate number of people, and they have to live in inhuman or subhuman conditions and so on. So one of the reasons you see this disparity in Dhanbad is because of the wealth, I mean, they have. How's mafia? I mean, mafia after all really was seen as a big city phenomenon, you know, Dawood. Or of course the famous, American God. But this operated in a small coaling town, and then the mafia was just incredible. It was as well organized as the big urban this thing, and they controlled, since there was nobody ready to protest. I mean, their control was far more. No mafia, Dawood could never ever imagine to have that kind of political protection. And what Sukhdev Singh or Sahadev Singh enjoyed. Yes, there has been slight amount of law and order deterioration, but by and large, the media has helped in creating a false image of Jharia coalfield and its mafia control. That now we used to talk of mafias and talk everything in coal belt, but now we find the mafias are working everywhere. In India, even Delhi also the mafias have emerged. So actually our whole system, our whole this society, that is moving towards mafia. And so here there is more wealth and less organizations of the so naturally here they are flourishing more. That is one thing. But it is a phenomena all over India where the mafias, the wrong elements, the musclemen and other things, they are ruling the roost. Is the future of Dhanbad? Can a new millennium city on Dhanbad's future as black hole that lies beneath its surface? इसको अगर सही तरह से कहा जाए, कोयला का अगर सही तरह से मैनेजमेंट हो, मतलब जो बोल रहे हैं कि इलीगल माइनिंग कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग तो ये लोग मजबूरी में पेट के भूख को मिटाने के लिए लोग, इसको अगर सही तरह से कोऑपरेटिव या समवाय तरीका से किया जाए तो यहाँ का जब कोयला है, यहाँ का बेरोजगारी भी हल हो सकता है, यहाँ उज्जवल भविष्य होगा, लेकिन मैनेजमेंट चाहिए। वैसा नहीं है, हम काफ़ी आशान्वित हैं और चूँकि इतिहास साक्षी रहा है कि जब कोई भी शोषण, लूट अपने चरम पर जाता है
तो लोग अपने लिए एक नई कहानी, एक नई उम्मीद गढ़ते रहेंगे। समय और संदर्भ इसको गढ़ेगा। यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। नए नए उद्योग लगा सकते हैं हम, वैकल्पिक उद्योग के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तक हम बार बार वहीं पर आ रहे हैं कि असली माफिया जो व्यवस्थापक के में बैठे लोग हैं, जो विधानसभा और संसद में बैठे लोग हैं, उनकी सुचिता नहीं होगी, जब तक उनका सामाजिक बोध नहीं जगेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ कोयलांचल का मामला हमको नहीं लगता है, पूरे देश में यही माहौल है। तो कोयलांचल भी इसी देश का एक अंग है। Yeah, but I think they have to change the image of Dhanbad, because as I said, I'm staying here since last 30 years. I didn't have any problems as far as mafia is concerned. I don't see them also on streets, and general public doesn't have any problems as far as mafia is concerned. Maybe they themselves fight among themselves, but general public are not affected at all by it. I feel it's the safest place even compared to Hyderabad, which is my hometown, because since last 30 years I didn't have any problems here. तो धनबाद का मिसाल मैं ये दे दूं यहाँ के मिल्लत का, भाईचारे का, कि हिंदुस्तान के कई शहरों में, हजारों शहरों में दंगा हुआ है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ। हमारे यहाँ इतना भाईचारा है, इतनी अच्छी चलन है, रिवायत है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। I've seen the darker side of India, or the lack of development of India, and this was like, it was what is Dante's Inferno, what he actually sculpted, but much worse because of the colors, or the lack of color. It was like monochromatic. I lived in England and in Scotland for 7.5 years. They had gone to Glasgow and Newcastle, similar places. In fact, Newcastle, as you know, is where the coal goes to. But kind of abject poverty comes when there is no recognition of the fact there are a large section of human beings in this country who is not going to be able to make it unless the state creates avenues for them to earn. Jharia, your documentary which runs into more than 1 hour, deals with the circumstances under which a particular person, Babulal Bhuiyan, how he died, how he was shot dead by personnel of the Central Industrial Security Force, and you deal into your film delves or investigates the circumstances which led to his killing. What happened after you made this film? In the 18 or 19 years since this film was shot and made, what has happened? Have you remained in contact with the people about whom you made this film? Have they been in contact with you? What exactly has happened thereafter? The most recent was a visit by one of the persons there. He is a washery, like a washery supervisor. And I said, so how is everybody? It's been quite... But one by one, all those people you and I knew, and we worked together as a team, they seem to have vanished. I'm the only one left. And if making sometimes does put people's work in jeopardy, if it's illegal work, in a sense it's illegal work outside the parameters of what's defined, and if it also does jeopardize people who have willingly put themselves in front of the camera, I have no answer to that question. What are your memories of the time we went to Dhanbad? What are the most stark images, recollections that you have? I've never seen so many guns out in the open before, so that was very, very stark. The other thing was that the thing I remember most is that even after we came back from Dhanbad, we were looking behind us to see who was following us. It was a very scary trip. So that was the things that I remembered long after I forgot the images. I often wondered, when people talk about terror today, they talk of terrorism.
and we talk about what terrorism is doing today. When you look back and you think of the kind of terror which I saw in Dhanbad, of the kind of vast numbers of people this mafia controlled, can anybody, any jihadi group dare to claim even 1/100th of this? I mean, so I think sometimes we tend to lose our priorities. We tend to, in the media today, think only in a particular, definition of terror. Because what I found in Dhanbad, that was real terror. That was, real terror affecting very large numbers of people. It's been 5 days since I returned to Dhanbad after a gap of a quarter of a century. I go back tired, but with very, very mixed feelings. For some, the future is indeed as black as the coal that lies beneath the surface of Dhanbad and Jharia. But just like the underground fires which have been burning for 100 years, within people I see that fire burning, that yearning for change. There are people here who are wildly optimistic. They believe Dhanbad can become better than not just Kolkata and Mumbai, but even Delhi. But I'm not so sure I share their optimism. डाल की मन घर ले गई, मन घर ले गई। खुशबू डाल की मन घर ले गई, गजब तरंग जमाल। भोर 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 भई उड़ता पंछी।